Chief, one final question, sir, and you've addressed this, but I just wanted to get it from you, because there are certain politicians who have decided to criticize it openly. Some politicians have announced dharnas in different parts of the country, including in Uttar Pradesh, over the Agnipath scheme. It looks like an attempt is being made to project the fact that this is a reform that has been pushed through without adequate consultation. Are you denying that that is the case at all, sir? That this was adequately consulted with all stakeholders and only then rolled out? Of course, like I said, it was nearly a 2-year process. There has been a lot of consultation, all three services. We have gone through a lot of debates and discussions, various options. There was a 3 years plus 5 years option, there was a 7-year option. Finally, after looking at all the pros and cons, and that is really going into the depth and into many of the concerns that are being kind of talked about, it is because of those that many of these final decisions were taken. The 4-year period was chosen very carefully. Idea being that there is enough time. A youngster is coming out at 22 years, 23 years with 12 lakhs. Either he gets into permanent or he has the entire field open for him and age on his side. There is a difference between a person retiring at 38 years and looking for a second career and at 23 years. So there are so many pluses. Plus, you look at the world over, in terms of security aspects, in terms of defense, in fact, our schemes will be much better than what is happening around the world in any case. And with this new scheme, next 2 to 3 decades, we are going to be with this kind of scheme. Any changes, minor course correction that will take place will happen, of course, as we go down. But this is the scheme and the way of things to come, and it must be clearly understood. We shouldn't get into, get swayed by unfounded concerns or lack of understanding. There's a lot of misunderstanding, and people should avoid, skepticism at this stage. Just one final point that I'm going to request you to make, Air Chief, which is that, the protests that we saw, these young people indulging in the violence, you just said that's the last thing that they should be indulging in if they are defense aspirants. I want you to switch to Hindi for just a moment, sir, because, these are all states which are Hindi speaking. All of these youths are Hindi speaking youth. So I want you to address them in Hindi for a moment. We will share what you say with as many of these youngsters as possible. So for the next 30-40 seconds, I want you to pretend like you are speaking to these defense aspirants, these young Indians, sir. Speak in Hindi, speak your heart, and tell them what you think they need to hear. अच्छा, ये सब लोग जो इस स्कीम के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड ये सब एस्पिरेंट्स हैं जो अग्निवीर या डिफेंस सर्विसेज में आना चाहते हैं, उनको मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले इस स्कीम को पूरी तरह से समझना चाहिए. आप गुमराह नहीं होए जो 2-3 बातें सुन के कि ये स्कीम खराब है या इसमें ये प्रॉब्लम है, एंड आप अपने ये सब आपने जो कदम उठाए हैं, आगजनी और दंगा फसाद, ये चीजें तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए. इस तरह के प्रोटेस्ट तो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट हैं कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो इन चीजों में बिल्कुल मत पड़िए. आपको कूलली बैठना चाहिए, इस स्कीम के सारे टर्म्स कंडीशन देखो और बेसिक चीज समझो कि ये इनिशियल स्कीम एज अग्निवीर 4 साल की है. इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ पे, इन टर्म्स ऑफ दूसरी कंडीशन सिमिलर है, पे ज्यादा है. 4 साल में आपके पास एक नियरली 12 लाख का आपके पास एक किट्टी होगा. अगर आप परमानेंट नहीं होते हैं तो इससे आप अपना कुछ भी सेट कर सकते हैं, और सरकार ने बहुत प्रावधान किए हैं जिसमें आप दूसरे CAPF में जा पाएंगे. होम मिनिस्टर ने ऑलरेडी ये क्लैरिफाई किया है. सम चीफ मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी बोला है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स में जॉब का प्रावधान करेंगे. और आप देखेंगे ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये एक बहुत बड़ा कदम है. आप इसमें आराम से अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए, इस स्कीम की एंट्री के लिए अपनी तैयारी करिए, इन सब प्रोटेस्ट से निकलिए और उस पर कंसंट्रेट करिए, तभी आप डिफेंस सर्विसेज में आ पाएंगे. एंड उसके बाद ये जब 4 साल आप इसमें रहेंगे, आप खुद देखेंगे कि 4 साल के बाद आपके एवेन्यूज पूरा, हम डिफेंस सर्विसेज बहुत सपोर्ट करते हैं.
आप हमारे पार्ट होंगे डिफेंस सर्विसेज के, एंड आपको पूरी सपोर्ट दी जाएगी फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज एंड दूसरे डिपार्टमेंट्स जो आपको दूसरे जॉब्स देने के लिए तैयार रहेंगे। अभी कल ही मैं एक पैनल पे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहा था। इंडस्ट्री में लोग देख रहे हैं कि जो अग्निवीर बाहर आएंगे उनको वो लेने को तैयार हैं। अभी से आप देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो आप बिल्कुल गुमराह नहीं होइए, और ये समय है अपनी तैयारी करने का, समय कम है, एंड अग्निवीर का जब सिलेक्शन आए तो आप अगर डिफेंस सर्विस में ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो उसकी तैयारी करके अपने पूरे दम से उसमें पार्ट लीजिए, और इस सब प्रोटेस्ट और ये गुमराह होने से बिल्कुल बचिए और निकलिए।